Hello! Happy and cheerful morning to all my dear students. I hope you all are fine at home and taking care of your health. So we are back with the science class, and what were we studying? We had started the chapter number 10, water and its forms. So let us quickly revise first that what we learned in the previous class. Okay. So, this is what we learnt. This is the first experiment that we learnt. It was water on cooling changes into ice. When we have to change from water to ice. Liquid से जब हमें solid में convert करना हो, तो हमने क्या किया था? हमने ice tray में water डाल के and then हमने उसे refrigerator में रख दिया था and वो जमने के बाद what happened? It converted into ice cubes. Then we learnt about how we have to convert ice into water. हमें solids को liquid में कैसे convert करना है? So for that we took few ice cubes and then we had kept it in a plate. What happened after some time? Ice cube melt होने लगी. It started melting and it converted from ice cubes to water. Then we studied about steam or water vapor. Okay? हमने क्या किया? We took a kettle and we had added water in it. हमने एक kettle में पानी डाला and फिर हमने उसको गैस पे रख दिया. When the water get heated, it converted into water vapor. Okay? So this is how we changed from water to steam. Then what happened? We wanted to see the water vapor and the water. हमें water के drops देखने थे. So हमने क्या किया? हमने इस steam के आगे plate रख दी. So what happened? The steam जो है वो water drops में convert हो गया. And then we were able to fill water through it. So what happened? We converted from steam or water vapor to water. स्टीम और वाटर वेपर दोनों एक ही बात है. ओके हम उसे स्टीम भी बोलते हैं एंड वाटर वेपर भी बोलते हैं. ओके सो नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वाटर साइकिल. ओके नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज वाटर साइकिल. हैव यू एवर थॉट हाउ डज द रेन कम्स? बारिश कैसे होती है? सो यू विल से through clouds. अब clouds कैसे बनते हैं? Do you know? No, right? So we will study about the water cycle, how these clouds are formed and then rainfall happens. Okay? Chapter 10. Okay. So first I will teach you and I will tell you in short and then we will watch the video. So see, this is a scenario of a sea or a lake. Okay, ये एक छोटा सा lake है and क्या होता है summer time में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना? Summer time में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है and the sun shines very brightly. So what happened? This water gets heated. ये जो water है summer time में heat हो जाता है ना? अगर हमने पानी की बॉटल भी समर टाइम में बाहर रखते हैं तो क्या होता है कि वो वाटर भी गर्म हो जाता है. सो इन द सेम वे दिस वाटर गेट्स हीटेड एंड जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत हीट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटर वेपर. ओके जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में कैसे देखा था कि जब केटल में पानी रखा वो स्टीम या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. The same way, this water gets converted into water vapor. Okay? You can see these are water vapor. Now what happens is, जब ये water vapor ऊपर जाता है, एकदम ऊपर. So what is it? The air is cool. वहाँ पे जो atmosphere है वो ठंडा होता है. So what happens? These water drops gets converted into clouds.
ये छोटे छोटे जो वेपर्स के होते हैं वाटर ड्रॉप्स, वो साथ में ज्वाइन होते जाते हैं. क्यों? बिकॉज ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा होता है. द एयर इज कूल एंड these tiny drops of water gets together and forms clouds. Okay? And finally, जब ये क्लाउड्स में बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाते हैं एंड ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, what happens? It rains. Okay students? So this is how what happens कि बारिश हो गई एंड देन वापस से पानी इन लेक्स सीज में वापस आ गया. So this is how the cycle keeps on going. क्या हुआ? I'll repeat it again. When it is very hot in summers, the water gets heated up. जो पानी है वो बहुत गर्म हो जाता है and it gets converted into water vapor. Okay, water vapor में convert होता है. Now this water vapor goes upside, वो ऊपर जाता है and the air is very cool over there. Then what happens? These water drops gets connected together and together they form clouds. Then finally, when the clouds gets full and there are many water drops in it, it rains. Okay, so this is how what happens कि water की cycle चलती है. यहाँ से water लेके ऊपर गया and वापस से water इसी में आ जाता है. Okay, so this is how the cycle keeps on going. So now we will first watch the video. Chapter 10. Hot steam cools down on touching the cold plate and changes into drops of water. Water cycle. During the daytime, the sun heats up the water in the lakes, rivers and seas. On heating, water changes into water vapor. The water vapor goes high up in the sky where the air is cool. Here the water vapor cools down and changes into tiny drops of water. These drops of water join to form clouds. In the clouds, more and more tiny drops join together to form large drops. These drops become heavy and fall on the ground as rain. Rainwater flows back into lakes, rivers and seas. It again gets heated by the sun and goes up to form clouds. Thus, water is always moving from lakes, rivers and seas to the sky and back. This is called water cycle. So, I hope it is clear to you, all of you. Okay, we have studied about the water cycle and it is very important, students. Now we will learn about snow. Snow देखा है आपने? Snowfall. It looks so pretty, isn't it? So we will learn how does the snow forms. Okay, ये snow जो है ये कैसे form होती है. And we will also learn one more new concept, that is hailstone. Now what is it? We will see in the video. Hail and snow. Sometimes it is very cold up near the clouds. The water drops freeze on their way and fall down as hailstones. So this is hailstone and this is snow. So they are very different. What did we say that hailstone क्या होता है? See, sometimes the weather is very cool. Now hailstones and snow are specially found in cold areas. है ना, जो हिल स्टेशंस होते हैं लाइक हिमाचल में मनाली, देन देयर शिमला, कश्मीर. सो हम क्या सुनते हैं कि वहाँ पे बारिश हुई ऑफ स्नो, दैट इज स्नोफॉल और hailstones. So what are hailstones? See, when there is the weather is very cold near the clouds. अब वाटर ड्रॉप्स तो ऊपर गए एंड क्लाउड्स बन गए, बट क्या हुआ? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्या होता है, जब बारिश होती है तो जो वो वाटर ड्रॉप्स होते हैं ना वो फ्रीज हो जाते हैं. फ्रीज मीन्स वो जम जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस इट गेट्स फॉलन डाउन इन दिस फॉर्म.
ओके, हेलस्टोन्स के फॉर्म में हमें ये दिखते हैं. आई रिपीट अगेन, जब वाटर वेपर बना, क्लाउड्स बन गए हमारे. बट अगर क्लाउड्स के आसपास बहुत कोल्ड वेदर होता है, बहुत ठंडी होती है, सो व्हाट हैपेंस व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, दीज रेन ड्रॉप्स गेट्स फ्रीज्ड. ये रेन के जो ड्रॉप्स होते हैं, जो बूंदें होती हैं, वो फ्रीज हो जाती हैं एंड इट बिकम्स hailstones. Now we will study about snow. Sometimes it is very cold in the clouds. So, water drops freeze in the clouds itself and pour down as snow. Now, if we talk about snow, the same thing. Clouds के आसपास बहुत cold weather होता है. But हमने hailstone में क्या पढ़ा था कि वाटर ड्रॉप जब हो रही होती है अर्थ पे, जब बारिश होनी स्टार्ट होती है, तब ऑन द वे, यानी कि ऊपर से नीचे तक के रिवे में तब फ्रीज हो जाती है. बट इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सो क्या होता है कि क्लाउड्स के अंदर ही वो ड्रॉप्स फ्रीज हो जाती हैं. जो हमारे क्लाउड्स हैं उसके अंदर ही वो वाटर ड्रॉप्स जम जाती है. अब वो वहीं पे आइस बन गई, तो वो कैसे आएगी नीचे? इन द फॉर्म ऑफ स्नो. इज इट क्लियर चिल्ड्रन द डिफरेंस? जब क्लाउड्स के अंदर ही जम जाए या फ्रीज हो जाए, इट इज स्नो. और जब नीचे आ रहे हो वाटर ड्रॉप्स और तब ऑन द वे बहुत ठंड हो, तब इट कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ hailstones. Is it clear, students? So now let us quickly discuss the question answers. Ice changes into dash when kept out of the refrigerator. Drops of water join together to form dash. Now answer in short. What happens when water in the river and sea gets heated by the sun? Water drops in the clouds become large and heavy. जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं और बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स कलेक्ट होते हैं, सो क्या होता है तब? सो दैट आई वोंट टेल यू. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन message me or you can call me. Okay, students? So we'll stop over here. God bless you all. Have a nice day. Goodbye.